हेलो बच्चों, स्वागत है आपका डॉक्टर सौरभ से क्लासेस में। और आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आईआईटी जेईई एडवांस का पेपर 1 2025। सो हम लोग ये लेके आए हैं क्वेश्चन 2। तो चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जो कि बहुत ईजी है, हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए, वी आर बीइंग गिवन लेट S1 S2 और S3, और यहाँ पे क्या डिनोट करता है? 1 डिनोट करता है बिकॉज दैट द स्टूडेंट कैन सॉल्व प्रॉब्लम। यहाँ पे कुछ कंसिडर्ड इवेंट्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे 1 मतलब कि स्टूडेंट कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर यहाँ पे 0 है मीन्स दे कैन नॉट। तो वी आर टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ PT where T मतलब क्या? T मतलब S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। मतलब S3 क्या हो जाएगा? S3 हो जाएगा 1, क्योंकि 1 मतलब क्या है? स्टूडेंट कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। सो गिवन P of U is 1 by 2. So P of U is 1 by 2. That means what? Where U means what? Where U means at least 1 of S1, S2, S3 can solve the problem. Can solve the problem. मतलब P of S1 is equals to 0, S2 is equals to 0 और S3 मतलब 0, that is equals to 1 by 2. Now second, P of V हम लोग को क्या दिया गया है? 1 by 10. तो हम लोग को समझ लेना तो पड़ेगा ना कि क्या दिया गया है। तो यहाँ पे where V मतलब क्या? कि S1 मतलब 1, S2 मतलब 0 और S3 मतलब भी 0। और फाइनली है PW। वो क्या है? PW मतलब 1 by 12। उसका मतलब क्या? कि W मतलब S2 है 1 आपका, और S3 क्या है? वो है 0। तो यहाँ पे वी हैव टू डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम इन द 3-bit बाइनरी स्पेस। जैसे कि ना P of I J K will be P of S1 जो कि I होगा, S2 जो कि J होगा, और S3 मतलब K होगा। So now there are 8 such combinations. Okay. So and what we have to define X0, because we have taken 3-bit binary space. 3-bit binary space. X0 is this one, X1 is P001, X2 is P002, X3 is P001, X2 is P010, X3 is P011, X4 is P0, X5 is P, X6 is P110, X7 is P111. Okay. So this, by this we are giving the 8 such combinations. Now what we have to do? We have to, from the condition, what we know that we have to see. So from the condition, X0 is P, S1 is 0, S2 is 0, S3 is 0. Okay, that is 1 minus PU, that's 1 minus 1 by 2. So that is half. Okay, now what is PV then? PV is P of S1, that is 1, S2 that is 0, and S3 that is 0, by P of S2 that is 0, S3 that is 0. Okay, so that is X4 by X0 plus X4.
So that's 1 by 10. Okay. So or we can write 10x4 is equals to x0 plus x4. Okay. Now we know what is x0, half from here. So we can put it up. So or 10x4 is half plus x4. Okay. Or x4 will be how much? 10x4 minus x4, 9x4. So 1 by 18. That is x4. Okay. Now PW is what? So PW is P, S2 is equals to 1 and S3 is equals to 0. So that is x2 plus x6. So 1 by 12. Okay. Now total probability sum to 1. So x0 plus x2 till x7. 4, x5, x6, x7. That is 1. So now we now know that x0 क्या है हम लोग का ये पता है x0 है half, x4 है 1 by 18 और x2 plus x6 है 1 by 12. So हम लोग को unknown निकालना है. unknown में क्या क्या है वही है x1, x3, x5, x7. That is equals to y. So then y, or we can write plus half plus 1 by 18 plus 1 by 12 is equals to 1, or y is equals to one side is equals to 1. So y plus 18, 9 plus 1 plus 1.5 is equals to 1, or 11.5 by 18 plus y is equals to 1, or y is equals to 6.5 by 18. So now what we have to find? So that is equals to 13 by 36 है ना. तो हमको क्या पता करना है? PT. So PT is equals to PS3 is equals to 1. उसका मतलब क्या? उसका मतलब हुआ x1 plus x3 plus x5 plus x7 और करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन ए. सो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स. अगर आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन चाहिए और एक्सपैंडेड फॉर्म चाहिए सोल्यूशन का या फिर कोई दूसरा कोई सोल्यूशन, आप कभी भी हमको इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो. थैंक यू.